Hello, my dear students. Hope you are doing well. Welcome to the Slate class of physics. So, students, in this class, we are studying the image formation using convex lens. Okay? In the previous videos, we have covered convex lens, properties of convex lens, and image formation of first three cases in which object was placed firstly beyond 2f, and then object was placed right at 2f, and then it was placed between focal point and 2f. Okay? All these images were real images, they were inverted images. Okay? So for that you have to see the previous videos, and here we are on the fourth case of image formation using convex lens, and in this case object is placed right at the focal point. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो आपने एक ऑब्जेक्ट को राइट एट द फोकल लेंथ प्लेस कर दिया. ठीक है, सो हाउ द इमेज विल बी फॉर्म्ड. वी नो द थ्री केसेस इन विच द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes from focal point after passing from lens, and the ray which is coming from focal point becomes parallel to the principal axis, and the last case was the ray which is coming from the optic center of lens goes undeviated, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता. सो इस केस में हम शायद फोकल पॉइंट वाली रे तो ड्रॉ नहीं कर पाए बिकॉज फोकल पॉइंट पर तो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. लेट्स ड्रॉ द अदर टू रेज. सो हैव अ लुक. फर्स्टली वी विल ड्रॉ अ रे व्हिच इज कमिंग फ्रॉम फोकल पॉइंट. इट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. एरो प्लेस करेंगे. व्हाट हैपेंस टू दिस रे एज इट passes from lens? This ray passes from focal point. ठीक है, this ray is passing from focal point after passing from lens. हर रे के ऊपर एरो जरूर प्लेस करना, right? And now the second ray which is coming from optic center. So this is a ray of light which is coming right from the optic center, and it will go undeviated. ठीक है, in fact, if you see this closely, these rays are not intersecting with each other. It means कि इस केस में real image form नहीं होगा. तो अगर real image form नहीं होगा तो कौन सा image form होगा? It will be a virtual image, right? So in this case, because rays will intersect at long distance, image is formed at infinity. Image is formed at infinity. ठीक है, अच्छा, what happens to this beam? It becomes a parallel beam of light. ठीक है, तो जो पर्सन इसको यहां से व्यू करेगा, this is the position of eye, he will observe that this beam of light is a parallel beam of light. ठीक है, so what are the properties? It is a virtual image which is formed at infinity. It is upright and it is magnified. ठीक है, what can be the use of this parallel beam of light? It can be used as a spotlight. ठीक है, सो इट्स यूज एज स्पॉटलाइट. ठीक है, जब आप अच्छा पढ़ेंगे एंड यू विल गेट अ डिस्टिंक्शन, यू विल बी अंडर द स्पॉटलाइट. ठीक है, सो इंशाल्लाह दैट स्पॉटलाइट, अगर आपकी डिस्टिंक्शन आएगी यू विल बी अंडर स्पॉटलाइट. सो आपने देखा होगा जब इवेंट्स वगैरह पर भी स्पॉटलाइट्स यूज होती हैं, वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट बन जाती है ना. ठीक है, सो हैव अ लुक एट नेक्स्ट केस, which is case number 5. Rather, it is the most interesting one. ठीक है, so याद रखेंगे वही rules apply करने. And why this case is different from the other cases? Because इस case में image उसी side पर form होता है जिस side पर object placed. For example, in this case, object is not represented by an arrow. Rather, it is represented by a small candle. ठीक है, so where the object is placed within focal length. Object is placed within focal length. So basically in this case object is very close to the lens. ठीक है, so मैं आपको बता रहा था
कि in this case object and image both are present at the same side of lens. प्रीवियस केसेस में आपने देखा था ऑब्जेक्ट एक साइड पर था और इमेज लेंस की दूसरी साइड पर फॉर्म हुआ था ना. इन दिस केस ऑब्जेक्ट जिस साइड पर है उसी साइड पर इमेज फॉर्म होगा. जैसा कि आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, तो इमेज भी लेफ्ट साइड पर ही फॉर्म होगा. ठीक है. सो लेट्स कम टू द रे डायग्राम. दिस इज अ रे which is coming parallel to the principal axis. ठीक है. This ray is coming right from the tip of flame of candle. ठीक है. इस पॉइंट से आ रही है ये रे. What will happen to this ray after it passes from lens? जो रे पैरेलल आती है after passing from lens, it passes from the focal point of lens. So here you have its ray diagram that it is passing from focal point of lens. इसके ऊपर भी एरो प्लेस करेंगे. ठीक है. And the second ray and the second rule, the ray coming from the optic center goes undeviated. ये ग्रीन वाली रे जो है ये ऑप्टिक सेंटर से आ रही है, इट गोज अनडेविएटेड. ठीक है. इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रही बिफोर पासिंग फ्रॉम लेंस एंड आफ्टर पासिंग फ्रॉम लेंस इट इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. एज यू कैन सी दैट दिस बीम ऑफ लाइट इज डाइवर्जिंग. ठीक है. इसका मतलब है कि ये रे ऑफ लाइट किसी सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करेंगी. डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करती. सो व्हाट ऑब्जर्वर विल सी इफ ही इज वॉचिंग फ्रॉम हेयर? ऑब्जर्वर को क्या नजर आएगा? फॉर दैट यू हैव टू एक्सटेंड दीज लाइंस इनसाइड द लेंस लाइक दिस, कि आप डॉटेड लाइंस फॉर्म करेंगे. व्हाई डॉटेड लाइंस? बिकॉज यहां से लाइट वर्चुअली आ रही है लेकिन फिजिकली इस पॉइंट से लाइट नहीं आ रही, वो तो कैंडल की टिप से आ रही है. ठीक है. सो दिस इज वन रे and this is the other ray. ठीक है. Now we can see that these rays of light are intersecting when we have drawn dotted lines, or dotted lines right at this point converge हो रही. ठीक है. So this position of eye, image is seen at that point and it appears that all the rays are coming from this point. In reality ये rays कहां से आ रही हैं? From the tip of flame, from the object. But it seems that all the rays are coming from this point. ठीक है. इसके ऊपर भी आप एरोज ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. अब यहां पर हम इमेज को प्लेस करते हैं. डेफिनेटली इमेज विल बी मच लार्जर इन साइज बिकॉज आपने उसको स्टार्ट करना है फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस एंड यू हैव टू ब्रिंग इट राइट एट दैट पॉइंट. कोशिश करता हूं मैं इसको यहां पर प्लेस करने में सक्सेसफुल हो जाऊं. ठीक है. आपकी दुआ होगी तो इसको प्लेस कर ही दूंगा मैं. करीब करीब हम पहुंच चुके हैं. परफेक्ट. राइट. सो द पर्सन, द ऑब्जर्वर, जिसने अपनी आईज को अदर साइड ऑफ लेंस पर अलाइन किया हुआ है, उसको ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस किया हुआ है विद इन फोकल लेंथ. ही विल सी द इमेज विद इन द लेंस फार अवे फ्रॉम लेंस बट लार्जर इन साइज. ठीक है. तो इस ऑब्जर्वर को ये लगता है, ये सेंसेशन आती है that image is formed inside the lens at greater distance and that image is enlarged upright, or because ये वाली rays intersect नहीं कर रही, this is virtual image. So what are the properties of image formed in this case? It is a virtual image. ठीक है. It is enlarged, or you can call it magnified, and it is upright.
ठीक है, it is virtual, it is enlarged, and it is upright image, right? So in this case, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, object and image are at the same side of lens. So what will be the use of this case? One major use of this case is magnifying glass. Magnifying glass. और याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आता ही ये वाला केस, राइट? सो इन दिस केस वी कैन क्लियरली सी दैट ऑब्जेक्ट इज एनलार्ज्ड. मैग्नीफाइंग ग्लास के केस में ऑब्जेक्ट को क्या करना है? नाम ही क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास. ठीक है, तो इमेज को मैग्नीफाई करना है, इमेज को एनलार्ज करना है. और फॉर एग्जाम्पल आप मैग्नीफाइंग ग्लास से टेक्स्ट रीड कर रहे हैं, अगर अपसाइड डाउन हो जाए तो टेक्स्ट रीड करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो अपसाइड डाउन नहीं होता, इन्वर्ट नहीं होता, दैट इज अपराइट, enlarged, and because that image cannot be caught on screen, that is a virtual image, right? So इस केस में ऑब्जेक्ट मैग्निफाइड है, सॉरी इमेज मैग्निफाइड है. सो देयर इज अ टर्म in optics referred as linear magnification, right? So we will study linear magnification now. आप लोग linear magnification की definition लिखेंगे. Linear magnification is the ratio of image size या image height to the object height. ठीक है, लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला. आप लोग लिख रहे हैं, शाबाश. लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन is equal to image height divided by object height. ठीक है, याद रखिएगा लीनियर मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला भी है, आप उससे भी परफेक्टली सेम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू linear magnification is equal to image distance. Image distance is measured from lens divided by object distance. ठीक है, both of these distances are measured right from the center of lens. So here you have two formulas of linear magnification. आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके अपना राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. याद रखिएगा, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू, LM मींस लीनियर मैग्निफिकेशन, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट सेम है, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम है. और सिर्फ एक केस में हुआ, जब ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड एट 2f एंड इमेज वाज आल्सो फॉर्म्ड एट 2f, केस नंबर 3. ठीक है, और उसका यूज था फोटोकॉपिंग मशीन. अच्छा, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब है इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर इन साइज है, इट इज डिमिनिश्ड, राइट? एंड इफ लीनियर मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, it means that image is larger than the object. Let's apply this formula on the last case to find out the linear magnification. याद रहे कि लीनियर मैग्निफिकेशन एक यूनिटलेस टर्म है, बिकॉज हाइट और हाइट बोथ आर मेजर्ड इन मीटर्स और सेंटीमीटर्स, दोनों यूनिट्स कैंसल आउट हो जाएंगे. ठीक है, सो फॉर दिस यू नीड कैलकुलेटर्स. आई हैव माय कैलकुलेटर. सो इस केस में मैं ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट लिखूंगा. So here we have a ruler. The height is measured with reference from principal axis, and in this case
object height is coming out to be 1.4 ऑलमोस्ट आ रही है, ठीक है, या 1.35 आ रही है. सो आई विल राइट ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू 1.35 and image which is much larger in size is at height of 1 2 3 4 4.5 4.5. ठीक है, दो डिस्टेंसेस और नोट कर लेते हैं. One distance is object distance and that distance is measured from the center of lens, from the optical center. ठीक है, इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is coming out to be 1.5678. Object distance is 1.8 and image distance is 1 2 3 4 5 and 6.0. Image distance is 6.0. Let's apply both formulas of linear magnification to find out कि आपका आंसर सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है. फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन का. सो लीनियर मैग्निफिकेशन is equal to height of image divided by height of object, and the second formula is distance of image from the from the lens and distance of object from the lens. दोनों में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. height of image is 4.5 and object height is 1.35. So from calculator, this value is coming out to be 4.5 divided by 1.35. This value is coming out to be 3.3. इसका मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट 3.3 टाइम्स enlarged. ठीक है, let's find out the value from the second formula which is 6.0 divided by 1.2. ठीक है, मैं यहां पर पॉइंट आउट कर रहा हूं कि इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ लेंस. दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज डिस्टेंस. डिस्टेंस ऑफ इमेज. ठीक है, सो दिस वैल्यू इज 6.0 divided by 1.8. Substitute this value in your calculators. 6.0 divided by 1.8. Once again, the value is coming exactly equal, which is 3.3. ठीक है, आपके सामने मैंने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट की और दोनों आंसर्स मैच हो रहे हैं. इनफैक्ट सेकंड डेसिमल प्लेस तक भी आंसर्स मैच हो रहे हैं. पहले वाले का आंसर 3.33 है और दूसरे वाले का भी आंसर 3.33 है. ठीक है, so you can get the same answer of linear magnification using any of the formula. Either you are using image height over object height or you are using the formula of image distance divided by object distance. याद रखिएगा, linear magnification is a unitless term. इसका कोई यूनिट नहीं होगा. अच्छा, अगर आपको लीनियर मैग्निफिकेशन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इस वैल्यू को सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करें. मल्टीप्लाई बाय 100 and this will give you 333%. So your image is enlarged by the factor of 333%, right? So this is it for today's video. We have done two cases of the ray diagram of convex lens and we have discussed linear magnification in detail. ठीक है, आप इस लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को बाकी केसेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं और जिस केस में इमेज डिमिनिश्ड है, स्मॉलर इन साइज है, उस केस में लीनियर मैग्निफिकेशन का आंसर 1 से लेस आएगा. राइट, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस. थैंक यू.